Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to start our lecture 7 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we were working on loop control instructions, and in loop control instructions, we have started while loop. While in this lecture, we will cover while loop in detail and we will do some programming practices using while loop. We will start our for loop and we will discuss its detail in for loop, and we will do some programming practices using for loop, and we will also start our do while loop in this lecture. While loop. As we have been studying that while loop has three parts: initial value, from where the loop take its start; test condition, the condition that would be tested, either it is true or false; and the third part is increment or decrement of the variable that will check the condition. Increment or decrement variable mean change in the value of variable on which the condition would be tested. So थ्री पार्ट्स हैं हमारे पास ही. इनिशियल वैल्यू, यहाँ से लूप हम स्टार्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट टेस्ट कंडीशन जो कंडीशन चेक होगी, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर चेंज इन वैल्यू जिसके अगेंस्ट दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. आए इसका फ्लो चार्ट एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका फ्लो चार्ट डिस्कस किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्टार्ट, then initial value, and then test condition. If the condition is true, control go to body of the loop, then increment or decrement, and again condition is tested. If the condition is still true, again control transfer to body of the loop, again increment or decrement, and again the condition would be tested. So this cycle would goes on until the condition is true, and when the test condition gets false, we would come out of the body of the loop, and the next statement after the body of the loop would be executed. So जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में घूमता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, बल्कि बॉडी से बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंट्रोल वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इसका सिंटैक्स एक दफ़ा दोबारा देख लें. इनिशियलाइजेशन योर फर्स्ट पार्ट, while test condition your second part, then body of the loop. ये जो आपके पास braces हैं, all the statements within these braces would be treated as body of the loop. So यहाँ पे हमने statement 1, statement 2 और statement 3 रखी हैं. तो आपकी मर्ज़ी है चाहे एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, ये आपकी मर्ज़ी है. And then increment or decrement in the variable on which the condition would be tested. So on behalf of initial value, condition would be checked, and if the condition is true, statements would be executed. Increment and or decrement, increment या decrement would occur, and again control transfer to test condition. So until the condition is true, the control would transfer into the body of the loop and statement would be repeated. The repetition of statements goes on until the condition is true, but when the condition gets false, the control would not enter into the body of the loop, rather control would come out of the body of the loop, and the next statement after the body of the loop would be executed. तो अगर आप इस वाइल के जनरल सिंटैक्स को
इसके फ्लो चार्ट के साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ किया है कि इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, जबकि बॉडी से बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। Let's have some programming practices using while loop. Write down the program that generate even numbers from 0 to 50. Write down the program that generate the following series: 1, 2, 4, 5, 7, 8. The number divisible by 3 is missed in this series. Write down the program that generate the table of any number n. Write down the program that calculate the factorial of any number n. First program, write down the program that generate even numbers from 0 to 50. So here is a variable n and we have set the value of n equal to 0. मीन हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। उसके बाद टेस्ट कंडीशन है n इज लेसर देन इक्वल टू 50, देन बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद स्टेटमेंट सी आउट, द वैल्यू ऑफ n वुड बी डिस्प्लेड, एंड देन इंक्रीमेंट n इज इक्वल टू n plus 2. So focus on three parts of the loop: initial value, condition, and increment. So when the value of n is 0, the condition would be checked. This condition is true. When n is equal to 0, 0 is lesser than equal to 50, control enter the body of the loop, and C out n mean the value of n would be displayed, that would be 0. So the first value that would be displayed would be 0, and then n is equal to n plus 2 mean 0 plus 2 would be equal to 2, and the new value of n would be 2. Again the condition is checked. Now the value of n is 2. For 2 this condition is again true. Again control transfer into the body of the loop. Again value of n would be displayed through cout statement. 2 would be displayed. Then n is equal to n plus 2 mean the new value of n would be 4. 2 plus 2, 4. So again condition would be checked, and the value of n is 4. 4 is lesser than equal to 50. Now 4 would be displayed, and the next value of n would be 6. As n equal to n plus 2 mean the new value of n would be the increment of 2 in the previous value of n. So if the previous value of n is 4, the new value of n would become 6, and in this way 6 would be displayed, then 8, similarly 10, and this process goes on up to 50. When the value of n becomes 52, the condition becomes false, and when the condition becomes false, control would not enter into the body of the loop, rather control would transfer on the get statement. So in this way this while loop would work until this condition is true. The value of n would keep on displaying with the increment of 2, and when this condition gets false, control would not enter into the body of the loop, and the next statement, which is get ch, would be executed, and that would be the end of the program. Our next program, write down the program that generate the following series: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया है कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप आपकी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है।
अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते और जस्ट आप क्वेश्चन देख के उसके डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं और उसकी लॉजिक पे गौर नहीं करते, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। आप अपना सफिशिएंट टाइम प्रॉब्लम को समझा करें और 100% प्रॉब्लम समझने के बाद डेवलपमेंट की तरफ जाया करें। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग है अप टू n। तो इस पर गौर करें अगर आप, तो इस सीरीज़ में हर वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल है वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 नहीं है, आगे 6 नहीं है, नेक्स्ट 9 नहीं है, देन 12 नहीं है। So every number that would be displayed by, that would be divisible by 3 would not be produced in this series. And for how long this series would be? It would be up to n. What is meant by n? n mean कि कोई भी ऐसा कांस्टेंट जो यूज़र इनपुट करेगा। अगर n की वैल्यू यूज़र 50 इनपुट कर देता है तो सीरीज़ 1 to 50 चलेगी। अगर n की वैल्यू 100 इनपुट कर देता है यूज़र तो सीरीज़ 1 to 100 चलेगी। अगर n की वैल्यू जो है वो 1000 इनपुट कर देता है यूज़र तो सीरीज़ 1 to 1000 चलेगी। सो इट्स अप टू द यूज़र कि वो n की क्या वैल्यू इनपुट करता है। प्रोग्रामिंग कोड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रख दिए। टेक 2 वेरिएबल, let's first is the x1 x and second is n. First cout statement would simply display enter the value of n, sin n mean n की वैल्यू इनपुट होगी। उसके बाद x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इस कोड को समझने की ज़रूरत है। ओवर हेयर इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1, कंडीशन x इज लेसर देन इक्वल टू n एंड इंक्रीमेंट x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे ये तीन पार्ट्स जो है इन पे फोकस करें। x इक्वल टू 1, x इज लेसर देन इक्वल टू n एंड x इक्वल टू x प्लस 1। सो फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 1 है एंड x इज लेसर देन इक्वल टू n। n कौन सी वैल्यू है? लेट्स से n की वैल्यू 50 है तो x इज लेसर देन इक्वल टू 50 होगा। अगर n की वैल्यू 60 है तो x लेसर देन इक्वल टू 60 होगा। अगर n की वैल्यू 100 है तो x would be lesser than equal to 100. So for how much time this loop would continue, it would depend on the value of n. So until this condition would remain true, these statement would keep on execution. But when this condition would get false, control would not enter into the body of the loop. So let's start it. x की वैल्यू 1 है। हमें जूम कर लेते हैं कि n की वैल्यू यूज़र जो है वो 50 देगा। तो अगर n की वैल्यू 50 है जो यूज़र इनपुट करेगा तो उसके लिए चेक कर लें x लेसर देन इक्वल टू 50। फर्स्ट x परसेंटेज 3 नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने आप लोगों से पहले भी ये कहा था कि अगर आपने कम्प्लीटली डिविजिबल चेक करना है किसी भी वेरिएबल के लिए तो उसके लिए आप स्लैश ऑपरेटर के बजाय मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मॉड ऑपरेटर जो है ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है और क्वोशंट के बिहाफ पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है तो उसका मतलब होगा कि दैट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पे हम स्लैश ऑपरेटर की बजाय मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन वी विल डिवाइड x परसेंटेज 3, x को हम 3 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम 1 परसेंटेज 3 करेंगे तो रिमाइंडर वुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 को, और फिर 3 की जब बारी आएगी तो 3 परसेंटेज 3 करेंगे तो रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू 0। सो फर्स्ट x की वैल्यू 1 के लिए कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर होगा।
उसके बाद कंडीशन एक और लगी हुई है उस पर, इफ कंडीशन, अगर नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है तो डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर डिविजिबल बाय 0 आ जाता है, डिविजिबल 3 पे इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर वो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। तो वो नंबर डिस्प्ले होने हैं जिनका रिजल्ट 3 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है, और जिनका रिजल्ट 3 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब होगा कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें वो नंबर डिस्प्ले नहीं करने, सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड नॉट इक्वल टू। x percentage 3 not equal to 0 mean the number is not divisible by 3. So only that value of x would be displayed for which the value of x is not divisible by 3. And when it would become divisible by 3 equal to 0, this statement would be skipped. आप लोगों को पता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट नहीं होगी? जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसने फॉल्स कब होना है? जब x परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो जब तक ये नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मतलब x की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो x की वैल्यू पहले 1 डिस्प्ले होगी, फिर इंक्रीमेंट लग जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 भी नॉट डिविजिबल नहीं है, 2 डिस्प्ले हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 परसेंटेज 3 दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब तक x परसेंटेज 3 नॉट इक्वल टू 0 आता रहेगा, तब तक जो है वो x की वैल्यू डिस्प्ले होती रहेगी, और जैसे ही x की वैल्यू डिविजिबल बाय 3 हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये स्किप हो जाएगी और इंक्रीमेंट लग जाएगा। इस तरह से लूप जो है वो n तक चलेगी, और ये जो कंडीशन है इफ वाली, ये हर दफ़ा x की वैल्यू को चेक करता रहेगा कि जब उसकी वैल्यू डिविजिबल बाय 3 आती है तो स्किप कर जाएगा, और जब तक नॉट डिविजिबल बाय 3 आपकी होगी, मीन उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, तब तक वो जो है वो x की वैल्यू डिस्प्ले करता रहेगा। सो यहाँ पे हम स्लैश ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि परसेंटेज या मॉड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉड ऑपरेटर ही हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और इसी रिमाइंडर के बिहाफ पे वी वुड चेक that whether the number is divisible by 3 or not divisible by 3. So if the remainder becomes 0, then the number is divisible, and if the remainder doesn't become 0, then the number is not divisible by 3. So we have placed not equal to, that means that we will only display those numbers which are not divisible by 3. Next program, write down the program that generates the table of any number n. Again, किसी भी नंबर n का टेबल जो है वो हमने प्रोड्यूस करना है, और जो टेबल होगा वो n मीन जो यूज़र इनपुट करेगा नंबर, उस नंबर का टेबल प्रिंट होगा। तो यहाँ पे n से मुराद that value of n would be input by the user. Again, first statement, enter the value of n. Scene n mean user would input the value of n. Again, x equal to 1, x is lesser than equal to 10, and x equal to x plus 1. सबसे पहले तीन चीज़ों पे फोकस किया करें: its initial value, condition, and increment. These are the statements that would be repeated until the condition is true. So when this condition gets false, control would not enter into the body of the loop, rather it would come out of the body of the loop. So to keep these statements running repeatedly would based on this condition. So first of all, x equal to 1,
x is lesser than equal to 10, condition is true, the control enter into the body of the loop. The first statement is t is equal to n steric x. N is the value that user have entered. लेट्स से कि यूज़र ने n की वैल्यू 2 दी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 t की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो वी हैव 3 वेरिएबल n, x एंड t. द वैल्यू ऑफ n इज 2, द वैल्यू ऑफ x इज 1, 2 multiplied by 1 equal to 2. So the value of t would be 2. Sorry. So cout statement हम यूज करेंगे. First value of that would be displayed, that would be the value of n. The value of n is 2. Steric is in inverted commas, so steric would be displayed as it is. Then the value of x would be displayed. So first time the value of n is 2, steric, value of x is 1, 2 steric 1, then equal to is again in inverted quotes, then value of t. आप लोगों को ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है, और जो वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होता है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है. तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी, स्टेरिक एज इट इज़ आएगा, फिर x की वैल्यू आएगी, इक्वल टू एज इट इज़ आएगा, और फिर t की वैल्यू आएगी. सो n इज 2, स्टेरिक 1, इक्वल टू 2. तो पहली लाइन जो डिस्प्ले होगी वो होगी 2 स्टेरिक 1 इक्वल टू 2. देन एंड ऑफ लाइन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगी. फिर x इक्वल टू x प्लस 1 mean when the value of x was 1. So after this statement x equal to x plus 1 mean x would get the increment of 1. 1 plus 1, the new value of x would be 2. So again the condition would be checked, and for 2, for the value of x 2, this condition is true. The control enter into the body of the loop, where this statement would repeat it again, t equal to n steric x. So n is 2, steric, the value of x is 2. 2 multiplied by 2, the new value of t would be 4. So 2 multiplied by 2, the value of t becomes 4. Again this statement, n is 2, steric, the value of x is also 2, equal to, the value of t is now 4. So the result of this statement this time would be like this, 2 steric 2 equal to 4. Then again x equal to x plus 1, the previous value of x is 2 plus 1, 3. So the new value of x would become 3. Again this condition would be checked. Again this condition is true. Control would enter into the body of the loop, t equal to n steric x. So the value of n is 2, steric, the value of x is 3, 2 multiplied by 3, the new value of t would become 6. Cout 2 steric 3 equal to, the value of t is 6. So the result of this statement would be 2 steric 3 equal to 6. Again x equal to x plus 1, the new value of x would be 4 now, as 3 plus 1, x is 4. So again the value, again the condition would be checked. Again it is true. Again control would enter into the body of the loop. Body of the loop mean your braces. This is your opening braces and this is your closing braces. So n is 2, steric, x is 4, 2 multiplied by 4 equal to 8.
the new value of t would be 8. N2 steric x4 equal to T8. So the result of this statement would be 2 steric 4 equal to 8 and line change हो जाएगी. तो सिमिलरली x की वैल्यू 5 हो जाएगी. अगेन यहाँ पे 5 की प्रोडक्ट आएगी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10. और उसके बाद जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल वुड नॉट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द लूप, रादर we would execute the next statement after the body of the loop, and that is get ch statement, and that is the end of the program. इसका आउटपुट चेक करें. यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ n जो है वो 3 इनपुट की है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9. So n is 3, steric x is 1, and result t mean the value of t is 3. 3 multiplied by 1 equal to 3. So this variant is x that start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This goes up to 10, and this is the value of n that remain 3 throughout the program, and this is the value of t that is calculated every time when the loop execute. So in the first cycle the value of t would be 3, second cycle value of t would be 6, third cycle value of t would be 9, fourth cycle value of t would be 12. So हर दफ़ा x की वैल्यू n की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर t की वैल्यू कैलकुलेट करेगी, और x आपका जो है वो 1 से लेकर 10 तक जाएगा. सो अगर आपने n की वैल्यू 3 दी है तो 3 का टेबल डिस्प्ले करेगा. अगर n की वैल्यू 4 दी है तो 4 का टेबल डिस्प्ले करेगा अप टू 10. और अगर n की वैल्यू आपने 2 दी है तो 2 का टेबल डिस्प्ले करेगा अप टू 10. तो कौन सा टेबल डिस्प्ले होना है? इट वुड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ n दैट यूजर वुड एंटर. We have another program. Write down the program that calculate the factorial of any number n. Dear student, प्रोग्रामिंग आपकी प्रैक्टिस का नाम है. जितने प्रोग्राम आप बनाएंगे उतना बेहतर आप लैंग्वेज को सीख सकेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, आपकी एबिलिटी इसमें, आपका कंट्रोल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. प्रोग्रामिंग कभी भी सुनने से या पढ़ने से नहीं आती. इट ऑलवेज कम्स थ्रू प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस वुड मेक यू परफेक्ट इन प्रोग्रामिंग. जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी ट्राई करें कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करें. तो आई विल आल्सो ट्राई फॉर एवरी सिंगल स्टेटमेंट आई विल develop some program for practice purpose and give you some assignments so that your practice really improve your programming skills. Write down the program that calculate the factorial of any number n. N again, what would be the value of n? User would decide. If user enter 4, mean the factorial of 4 would be calculated. If user enter 5, the factorial of 5 would be calculated. So the factorial of n mean the value of n user would enter. If the user would enter 5, the factorial of 5. If the user enter the value of n is 4, the factorial of 4 would be calculated. So whatever the number user would enter, this program would calculate the factorial of that number. Similarly, we have entered the value of n, and again यहाँ पे मज़े की बात यह है कि लूप हमारी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगी. इट वुड वर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Loop would not go from 1 to n
rather loop would go from n to 1. अगर n की वैल्यू 5 है तो लूप 5 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो लूप 4 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी। और अगर n की वैल्यू 6 है तो लूप 6 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लूप हमेशा आपने 1 to n असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। You can do it even in descending order, starting from the ending point and come to the 0 point or the first point. So over here we have tried to do this using descending order. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्टोरियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बनाएं, आप उसे असेंडिंग में भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी लॉजिक पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे करते हैं। बहरहाल मैंने इसे डिसेंडिंग में किया है क्योंकि मैथमेटिकली ये काम सारा फैक्टोरियल वाला डिसेंडिंग में होता है, तो मैंने उसी मेथडोलॉजी को फॉलो किया। अगर आप चाहें तो आप इसे 1 to n भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी लॉजिक होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो लेट्स assume the value of n is 5. 5 is greater than equal to 1. F equal to f multiplied by n, while f is initialized at 1. So 1 multiplied by 5, the value of f would be 5. Then n equal to n minus 1, mean value of n would be the equal to 4 after the decrement of 1. 5 minus 1, the new value would be 4. Again test condition, 4 is greater than equal to 1, it's true. Then f equal to f multiplied by n. The previous value of f is 5. 5 multiplied by 4, the new value of f would become 20. So keep in mind that the value of f has become 20. N equal to n minus 1, 4 minus 1, the new value of n is 3. Again condition is checked, condition is true. So 20 multiplied by 3, the new value of f would become 60. So always keep in mind that the new values overlap the previous value. So right now it is 20 multiplied by 3, that is 60. So the value of f is now 60. N is n minus 1, mean 3 minus 1, 2. Again condition is true, n is equal to 2, 2 is greater than equal to 1. Again control transfer in the body of the loop, 60 multiplied by 2. The new value of f would be 120. And then n equal to n minus 1, 2 minus 1, 1. Again the condition is true, 1 greater than or equal to 1, true. F equal to f multiplied by n, 120 multiplied by 1. The new value of f would be 120. And n equal to n minus 1. The value of n, 1 minus 1, it would become 0. And for 0, this condition would get false. And when this condition gets false, control would not enter into the body of the loop. Rather, control would go to the next statement after the body of the loop. So the next statement is Cout factorial of n equal to then f. The value of f would be displayed after this sentence. So the most recent value, the last value of f was 120. So the result would be displayed as 120. If the user have entered the value of n is 5, the factorial would be 120, and similarly जो भी value user enter करेगा उसके against f calculate होगा through this loop and the value of f would be displayed. यूजली जो यूज़र गलती करता है, जो प्रोग्रामर गलती करता है, या जो मुझे कहना चाहिए जो स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को लूप की बॉडी में रख देते हैं। अब उससे होता क्या है कि आपका फैक्टोरियल जो है वो चूँकि लास्ट में कैलकुलेट होना है, लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट लूप की बॉडी में आप इन कर देंगे तो वो सारे रिज़ल्ट डिस्प्ले करता जाएगा
जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 भी डिस्प्ले करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 भी डिस्प्ले करेगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 भी डिस्प्ले करेगा, और 120 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 120 भी डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमें जस्ट 120 रिक्वायर्ड है, इसलिए हम ये वाली स्टेटमेंट लूप की बॉडी में नहीं रखेंगे, क्योंकि लूप की बॉडी में अगर ये स्टेटमेंट चली जाएगी तो एवरी वैल्यू ऑफ f वुड बी डिस्प्लेड, but as we know that we need the last value of f, so we would not keep the value of f in the body of the loop, rather we would display the value of f after the body of the loop, so that the most recent, the last value of f would display. Here is the output of this program. Enter the value of n. I have entered 5. The factorial of n is 120. आप जो भी n की वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे, उसका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, तो इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपने n की वैल्यू 4 दी तो 4 3 12 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 24 is the factorial of 4 and that would be displayed. So depending upon the value of n, the factorial of n would be displayed. We have some operators left to discuss. Let's discuss them. Increment or decrement operators, mostly used in loop statements. We have plus plus operator. It is called increment operator, and the second operator is minus minus, that is called decrement operator. So how they work? Let's say we have written like this. For example, n plus plus, it is same like n equal to n plus 1. n plus plus मीन कि ये n की वैल्यू में एक का इजाफा करेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपने लिखा है n प्लस प्लस, तो इट मीन द न्यू वैल्यू ऑफ n वुड बी 5, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5 और आपने लिखा है n प्लस प्लस, द न्यू वैल्यू वुड बिकम 6. Plus plus operator or increment operator is used to increase the value of variable by 1. Like this, if n plus plus, it is similar like this, n equal to n plus 1. And similarly, n minus minus is same as n equal to n minus 1. So let's say the value of n is 5 and you have write n minus minus, then the new value of n would become 4. And if the value of n is 4 and you would write n minus minus, the new value of n would become 3. So it is like that, same as n equal to n minus 1. So whenever plus plus is there, that would mean like n equal to n plus 1, and if minus minus is there, mean there is a decrement of 1. So plus plus operator increase in the value by 1 and minus minus decrease in the value by 1. As हम जो भी प्रोग्राम जो है वो करते हैं तो उसको जावा में भी डिस्कस करते हैं और सी प्लस प्लस में भी डिस्कस करते हैं, ताकि जो लोग जावा में काम कर रहे हैं वो भी इसको कर लें और जो लोग सी प्लस प्लस में कर रहे हैं वो भी इसको कर लें। तो मैंने 2 प्रोग्राम जो है वो जावा में भी आपके लिए अटैम्प्ट किए हैं। सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आपकी लूप जैसे आपने सी प्लस प्लस में की हैं ऐसे ही आपकी जावा में भी होंगी। Write down the program that generate the table of any number n. वही प्रोग्राम है जी, आपने n का टेबल जो है वो डिस्प्ले करना है और n मीन जो यूज़र इनपुट करेगा। तो यहाँ पे आप देखें एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में आपकी सी आउट होती है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू ऑफ n एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। s इक्वल टू str डॉट रीड लाइन, ये वाला फंक्शन आपका स्ट्रिंग इनपुट करेगा, वो स्ट्रिंग s को मिल जाएगा और फिर इंटीजर डॉट पार्स इंट से s जो स्ट्रिंग आपने एंटर किया है वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर n को मिल जाएगा।
सो जो भी आपने वैल्यू एंटर की है वो इन 3 स्टेप से, इस स्टेप से वो स्ट्रिंग में, मतलब आपने अगर 2 एंटर किया है तो वो 2 जो है वो s को मिलेगा, एंड that would be string, and with the help of integer dot parseInt, that string would be converted into integer value, and the value of n would become that integer that you have entered from the keyboard. So again ये वही syntax है, x equal to 1 initial value, condition and statements. This is the body of the loop. So x equal to 1, the condition is would be checked. If the condition is true, t equal to n multiplied by x, this statement would be executed. The new value of t, for example, x is 1, n is 2, 2 multiplied by 1, t would be 2. So first n would be displayed, that would be 2, then static, then x1, then equal to, and then t 2. सो जो भी चीज़ कोट्स में होगी वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी, एंड प्लस डज नॉट मीन कि यहाँ पे वो कोई प्लस ऐड कर रहा है, रादर ये कनकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। स्ट्रिंग आपका यहाँ पे कनकैट हो रहा है, तो यहाँ पे ये होगा कि आप n की वैल्यू डिस्प्ले होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, फिर उसके बाद x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, 2 के लिए कंडीशन अगेन ट्रू है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो ये देखें, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो बेसिकली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, t की वैल्यू 2, और ये स्टेटमेंट जो है ये उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट कर रही है। तो जब n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो t 2 आएगा, फिर n 2 है, x भी 2 है तो t आपका 4 हो जाएगा, फिर n 3 है, n 2 है, x 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, t की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर x 4 हो जाएगा तो t 8 हो जाएगा, फिर x 5 हो जाएगा तो t 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, और ये जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आपके अकॉर्डिंगली 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा। पहले n की वैल्यू, फिर स्टैरिक, फिर x की वैल्यू, फिर इक्वल टू, और फिर t की वैल्यू। सो दिस प्रोसेस वुड गोज ऑन। सो रिपीटेडली फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 डिस्प्ले होगा, सेकेंड टाइम लूप चलेगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिस्प्ले होगा, थर्ड टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ x, this would be the value of 2, value of n, and this would be the value of t, the value of x, the value of n, and the values of t. So in this way the value of x would start from 1 and goes up to 10. The value of x multiply with the value of n, and the result comes in t. So first time it is 2 multiplied by 1 equal to 2, second time 2 multiplied by 2 equal to 4, third time 2 multiplied by 3 equal to 6, and this process goes on up to 10. When x becomes 11, the condition becomes false and control come out of the loop. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे हमने C++ में किया है। वाइल लूप का सिंटैक्स सेम है, कोई तब्दीली नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको जावा में भी डेवलप कर दिया। जो लोग जावा में काम कर रहे हैं वो लोग अब इसको एज इट इज़ लेके चलते रहें, कोई मसला नहीं। एक और प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए किया जावा में, राइट डाउन द प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर n। ये फैक्टोरियल हमने C++ में भी किया है, अब हम इसे जावा में करते हैं। तो उसी तरीके से पहले एक स्ट्रिंग लेंगे, इनपुट करेंगे, वो स्ट्रिंग s को असाइन होगा, और फिर इंटीजर डॉट पारसेंट से वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होकर n को मिल जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी इंटीजर इनपुट हो जाएगी। अगेन उसी तरह से लूप को मैंने n to 1 चलाया, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी जैसे आपके पहले C++ में किया है। ये कोड आपका बिल्कुल सेम है। तो अगेन लूप जो है n की वैल्यू 5 है तो 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, फिर n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के लिए ट्रू है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, f की वैल्यू 20,
फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, तो आप यहाँ पे n इक्वल टू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एंड n माइनस माइनस सेम इज़ देयर। सो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप C++ में भी यूज़ कर सकते हैं और जावा में भी। तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, द न्यू वैल्यू ऑफ f वुड बी 60। फिर n की वैल्यू n माइनस माइनस से 2 हो जाएगी, 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। फिर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 के लिए भी ट्रू है, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 120। फिर n की वैल्यू 0, 0 के लिए कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड एंड द वैल्यू ऑफ f वुड बी डिस्प्लेड, दैट वुड बी 120। तो आउटपुट इसका इस तरह से, एंटर द वैल्यू ऑफ n, यूज़र ने वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 एंटर की, तो फैक्टोरियल वुड बी कैलकुलेटेड एज 120। तो जो भी यूज़र n की वैल्यू एंटर करेगा, आपका ये प्रोग्राम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट है जी कुछ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। प्लस इक्वल टू, for example, counter plus equal to 3, it is exactly same like counter is equal to counter plus 3. So whenever plus equal to is there, तो उसकी एग्जीक्यूशन में आपने ये सिमिलरिटी देख लेनी है कि इफ़ काउंटर प्लस इक्वल टू 3 इज़ देयर, तो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू काउंटर प्लस 3। सो अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 है और काउंटर प्लस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो ये होगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 3। और अगर काउंटर की वैल्यू 3 है, तो काउंटर प्लस इक्वल टू 3 वुड बी काउंटर प्लस 3 मीन 3 प्लस 3, द न्यू वुड बी 6, न्यू वैल्यू वुड बी 6। सिमिलरली मीन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो नई वैल्यू दोबारा वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो पहले प्रीवियस वैल्यू में ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि 3 वुड बी एडेड इनटू द वैल्यू ऑफ काउंटर एंड द न्यू वैल्यू वुड बी असाइन टू अगेन दिस काउंटर। सो इफ द काउंटर वैल्यू वाज 3, 3 प्लस 3, द न्यू वैल्यू वुड बी 6। सिमिलरली माइनस इक्वल टू, पहले माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर वो न्यू वैल्यू जो है वो उसी वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। For example, counter minus equal to 5, this is exactly similar as counter equal to counter minus 5. For example, the value of counter is 10, the counter minus equal to 5 mean counter equal to counter minus 5, 10 minus 5, the new value of counter would be 5. Similarly, steric equal, if it is x steric equal to 2, it is exactly similar like x equal to x multiplied by 2. If it is slash equal, x slash equal to 2, it is exactly similar like x equal to x multiply x slash 2 divided by 2. Then percentage mod equal, x mod equal to 2 is same as x equal to x mod 2. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, इन पांचों ऑपरेटर्स में पहले अरिथमेटिक वाला काम करेगा, और अगर वो प्लस है तो पहले वैल्यू ऐड कर देगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, स्टेरिक है तो मल्टीप्लाई कर देगा, स्लैश है तो डिवाइड कर देगा, मॉड है तो रिमाइंडर कैलकुलेट कर देगा, और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वही वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे काउंटर प्लस इक्वल टू 3 था, तो ये पहले काउंटर में 3 ऐड करेगा और फिर न्यू वैल्यू काउंटर को असाइन कर देगा। और यहाँ पे काउंटर माइनस इक्वल टू 5 है, तो पहले काउंटर में 5 माइनस करेगा और फिर न्यू वैल्यू काउंटर को असाइन कर देगा। यहाँ पे स्टेरिक इक्वल टू 2 है, तो पहले x में 2 मल्टीप्लाई करेगा और फिर न्यू वैल्यू अगेन x को असाइन कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे x स्लैश इक्वल टू 2 है, तो पहले x को 2 पे डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आएगी वो दोबारा x को असाइन कर देगा। और x मॉड इक्वल टू 2 मीन पहले x को 2 पे डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अगेन x को ही असाइन कर देगा। तो इस तरह से अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेंगे। अगेन इसको एक दफ़ा देख लें। प्लस इक्वल टू 3 मीन काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 3, माइनस इक्वल टू 5 मीन काउंटर इक्वल टू
काउंटर -5। आप इनको एक दफ़ा आराम से चेक कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में भी हमारे यही 3 पार्ट होंगे, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, इस इनिशियल वैल्यू पे कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट राइटिंग मैकेनिज्म वाइल और फॉर का डिफरेंट है कि उसमें तरतीब और है, और यहाँ पे ये जो तीनों पार्ट हैं, इनिशियल वैल्यू, टर्मिनेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये एक ही लाइन में लिख दिए जाते हैं और बॉडी ऑफ द लूप में जस्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो इनिशियल वैल्यू के अगेंस्ट कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फिर इंक्रीमेंट लगता है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती है। फॉर एग्जांपल, काउंटर इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंटर लेसर देन 9, काउंटर इक्वल टू काउंटर +1। तो 0 के लिए कंडीशन ट्रू है और सबसे पहले काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दैट इज़ 0। फिर काउंटर इक्वल टू काउंटर +1, तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, अब काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज़ ट्रू, देन अगेन काउंटर वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड, दैट इज़ 1। फिर काउंटर की वैल्यू इस इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी, 2 के लिए ये कंडीशन फिर चेक होगी, इफ़ इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, काउंटर वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड, दैट इज़ 2। देन 3 के लिए कंडीशन चेक होगी, 3 वुड बी डिस्प्लेड, देन counter is equal to counter +1 mean the new value of counter would be 4. Again the condition is true for 4, the value of counter would be displayed, that is 4. Then 5, condition is true, statement would be executed. Then 6, condition is again true, 7, condition is true, 8, condition is true, counter would be displayed, 9, condition is true, counter would be displayed. Then 10, when the value of counter become 10, this condition would become false because this condition is true until the value of counter is lesser than 10. But when the value of counter becomes 10, this condition gets false and control would not enter into the body of the loop. So the result of this loop would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the values of the counters that would be displayed in each cycle. In the first cycle 0 would be displayed, second cycle 1 would be displayed, third cycle 2 would be displayed, and this process continues up to 9. And when the value of counter becomes 10, the condition becomes false and the loop would not run again, the control would not enter into the body of the loop. So loop would start from 0 and goes up to 9 with the increment of 1. The result would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So dear students, जो भी काम हमने while loop से किया है, please convert all those program using for loop. Inshallah, I would present all those programs using for loop in the next lecture, but please try to develop by yourself so that we can compare your program with mine and we can fix if somewhere is error or some problem is there. So try to develop your own programs. Unless you wouldn't develop your own program, you cannot do programming with perfect attempt, or you can say you cannot control programming until or unless you do it by yourself. So programming wouldn't come through learning, rather programming would come through practicing.
So class is important, but the most important thing is your practice. जितने भी हमने प्रोग्राम वाइल लूप से किए हैं उन सारे प्रोग्राम्स को फॉर लूप में कन्वर्ट करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सारे प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप जो है वो डिस्प्ले करूँ. थैंक यू वेरी मच.